आंसर के सत्र में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में AlCl2। कलर ऑफ द सॉल्ट इज येलो, टेक्सचर ऑफ द सॉल्ट इज एमोर्फस एंड सॉल्युबिलिटी दैट इज कोल्ड वाटर। ओके, ड्राई टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल। ओके, एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन में और इंटरफेरेंस में क्या लिखना है आपको। ड्राई टेस्ट ट्यूब हीटिंग टेस्ट अगर होता है तो उसका एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा, इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ए पिंच ऑफ सॉल्ट वाज हीटेड। एक्सपेरिमेंट आप वही करेंगे। ऑब्जर्व आप क्या करेंगे, सॉल्ट वाज फास्ट मेल्टेड बट फाइनली इन्फ्यूजिबल व्हाइट मास लेफ्ट। आपका इन्फरेंस में क्या आएगा। उसी तरह दूसरा आपको देखना है हीटेड इन चारकोल एक्टिविटी, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ओके, ड्राई टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल, देन टेस्ट विथ कंसनट्रेटेड H2SO4। देन आपको फिर दिखना पड़ेगा कन्फर्मेटोरी टेस्ट फॉर Cl, वेट टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। ओके, लेट किस में है, अगर वो बेसिक रेडिकल यानी इफ एडेड द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द सॉल्ट सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, नो PBT वाज फाउंड एंड Pb2+ वाज एब्सेंट। ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कन्फर्मेटोरी टेस्ट फॉर एल्यूमिनियम Al3+, experiment 2 ml of salt solution was taken in the test tube, sodium hydroxide solution added drop wise and then excess। ऑब्जर्व आप क्या करेंगे, व्हाइट PPT obtained and then soluble with the excess sodium hydroxide। interference that is Al3+ confirmed। ओके, आप इन्फरेंस में देखते आ रहे थे ये सॉल्ट क्या है। ओके, कंक्लूजन में फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड that the supplied salt contain Al3+ and Cl- radical। ओके, नेक्स्ट सॉल्ट में हम जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड है BaSO4। कलर ऑफ द सॉल्ट दैट इज वाइट, टेक्सचर ऑफ द सॉल्ट इज एमोर्फस, सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, experiment, observation and then interference, heated in charcoal activity, then test for sulfate SO4 2-। okay, wait for the basic radicals, then we will write the flame test, whatever you will show in the PPT you will be right। dry test for acid radical, दो आपका रहता है ना, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल फॉर द गिवन सॉल्ट सैंपल। ओके, टेस्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन टेस्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, देन फाइनली दैट इज कंक्लूजन, द अबव सॉल्ट कंटेन्स बेरियम दैट इज Ba2+, सल्फेट SO4 2- ion। नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द सॉल्ट फैमिली, देन द मेन एक्सपेरिमेंट, हाउ यू विल बी राइट। ओनली यू विल राइट टू प्रिपेयर द 100 ml ऑफ M20 सोल्यूशन। यहाँ पे M50 भी आ सकता है, M20 भी आ सकता है, दैट इज डिपेंड अपॉन योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वो कैसे आपको यानी गाइड करेंगे। M20 सोल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट टू फाइंड आउट द मोरालिटी एंड ये थोड़ा स्पेलिंग में शायद एरर हो सकता है, वो मोरालिटी नहीं मोलारिटी होगा, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन KMnO4 solution by titrating against the M20 Mohr salt solution। then you will be write the requirement, then theory। okay, which kind of things that you are doing in your chemistry lab, you will write the IBR and FBR, then difference। okay, calculation M1 that is molarity of KMnO4, V1 volume of KMnO4, M2 molarity of Mohr salt, V2 that is volume of the Mohr salt। okay, M1 V1 is equal to M2 V2, that we needed M1 that is M2 V2 divided by V1। this is completed about your Mohr salt, M2 Mohr salt solution। next, another salt that is NH4Cl। okay,
color of the salt that is colorless, texture of the salt crystalline, soluble in cold water. According to your previous, that is BaSO4 AlCl3, okay, then you will be do this the same basic radical by heating test, charcoal activity, soda lime test, okay. Then acid radical, that is diluted soda hydrochloric acid HCl, then sulfuric acid H2SO4, okay. Then test with concentrated sulfuric acid and MnO2. Confirmatory test for chlorine. Then this is over. That group 3 and group 4, how you will take your experiments, what the observation that you have drawn from that, and what is the inference. Okay, next we will go through another salt family, then that is SrCl2. Okay, texture of the salt crystalline, solubility in water. Okay, then according to the previous, the basic radical test by heating test, charcoal activity, यहाँ पे ए थोड़ा मिसिंग हो गया है, ओके, एक्टिविटी. देन कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, then flame test, dry test for acid radical, test with dilute HCl, test with concentrated H2SO4, confirmatory test for Cl, weight test for basic radicals, group 1, 2, 3, 4, 5. Procedure was same for all. Then confirmatory test for strontium. Then conclusion. From the above experiment, it was found that supplied salt contain strontium and chlorine, the radical that is strontium chloride. Next, we will go to another experiment. That is यहाँ पे थोड़ा M50 सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड लिखा हुआ है. अगर यहाँ पे M20 रहेगा तो रिक्वायरमेंट में आपका M20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन लिखा होगा, ओके. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. नीचे आपका जो कैलकुलेशन दिया होगा, और ये टैबुलेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है. योर लाइट volume of the oxalic acid 20, IBR that is 0, FBR that is final 8.3, difference that is 8.3. okay, here in the calculation you will be write where the 50 is written. If that is M20 that you have written here, you will written 20. If at the M of the experiment that is given M50, then in the calculation you will be write 20 according to the given question. Okay, then that is conclusion. This oxalic acid part is over. Functional groups, test for aldehyde. What is the theory? Okay, aldehyde give additional product with Gibbs reagent. Then second, aldehyde are easily oxidized to the corresponding acid in comparison to ketone, even by mild oxidizing agent like tolerance agent. Okay, variety kind of agents are present. Gibbs reagent test, okay, then Felling's test, tolerance reagent test, okay. Then this is completed for aldehyde. Then we will be moved to ketone, okay. Test for ketone compound give red complex with sodium nitroprusside in alkaline medium. Sodium nitroprusside test, okay. Experiment, then observation, then your inference.
take 1 ml of sodium nitroprusside solution and shake it alkaline with sodium hydroxide. Added 1 ml of supplied organic compound to it, shake well. Okay, then 2,4 DNP test, then your chemistry answer is over. Okay, thanks to all the best for your next January practical exam. Hope for best. Thanks to all.